I welcome you all to the next session of macroeconomics of your SYBCom. In this session, we will be dealing with the next concept, that is the concept of investment multiplier and acceleration principle. We will be learning with the concept investment multiplier and acceleration principle. Before moving to the concept, I would just like to recall what we studied in the previous session. In previous session, my dear student, we studied about what are the long term determinants and short term determinants of marginal efficiency of capital. हमने क्या स्टडी किया था कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसमें से भी दो टाइप के फैक्टर्स हैं, दैट इज़ लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन फैक्टर्स. Long run factors are basically those factors which will affect the investment marginal efficiency of capital in long run, whereas in short run factors are those factors which will affect the marginal efficiency of capital in a short run only. Clear to it? And determinants are nothing but the factors which affect certain things. Before studying or before recalling what are the determinants of marginal efficiency of capital, we would just like to recall what is marginal efficiency of capital. Marginal efficiency of capital is nothing but the relationship between, or it is the percentage or the rate of it is the rate of interest or profit what the businessman or the investors accept in future but investing today, that is called as marginal efficiency of capital. Marginal efficiency of capital is nothing but the prospective yield what an investment will yield in future, that is marginal efficiency of capital. Marginal efficiency of capital basically depends upon the supply value. Higher the supply value, higher will be the marginal efficiency of capital. Lesser the supply value, lesser will be the marginal efficiency of capital. But this is what we studied about marginal efficiency of capital. But there are certain factors too which affects the flow and which affect the percentage of marginal efficiency of capital. Clear to it? They are short run and long run. In short run, first one is expected demand for the product, then cost and price, then stubborn change in income, then we have current rate of investment, then we have waves of optimism and pessimism, then prosperity to consume, then current state of expectation. These are all short run determinant of marginal efficiency of capital. There are long run determinant of marginal efficiency of capital too. What are they? First one is the rate and growth of population, then we have as development of new areas, then we have technological factors, then productive capacity of the industry, then we have level of current investment, then the quality of capital goods of relevant type already existence, rate of taxes. This was all we studied about in previous session. In today's session we will be dealing with the concept of investment multiplier and the acceleration principle. Clear to it? Okay, let's move further. Investment multiplier. The concept of investment multiplier. The concept of multiplier was first time developed by F.A. Khan in the early 1930s. F.A. Khan developed the concept of multiplier with reference to the increase in employment, direct as well as indirect, as a result of increase in the volume of employment. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये जो कंसेप्ट है ये F.A. खान जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने डेवलप किया है. कब डेवलप किया है? इन 1930s में. एंड दिस concept was developed with reference to employment, that is direct and indirect employment. Higher, he says, higher the employment, higher will be the multiplication of investment. Lesser the employment, lesser will be the multiplication of development. The concept of investment multiplier was developed by J.M. Keynes in his theory of income, output and employment. और आगे इस कंसेप्ट को J.M. कीन्स ने भी डेवलप किया और उसने अपने ये कंसेप्ट्स को
कौन से थियोरीज में बताया? इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट थियोरीज में. कीन्स बिलीव दैट ऑन इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस द फाइनल इनकम बाय मैनी टाइम्स. क्या बताया? इनिशियल लेवल पर जब इनकम इंक्रीज होता है, इनका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, एंड जब इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होता है, इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज होता है. व्हाट ही सेज फर्दर, investment multiplier shows a relationship between initial increment in the investment and resulting into initial increment in the national income. उन्होंने क्या बताया है कीन्स ने कि इनिशियल लेवल पे जैसे ही इनकम इंक्रीज होता है वैसे ही इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होता है, और जैसे ही इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होता है वैसे ही इनिशियल लेवल पर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होता है. Thus he states that investment multiplier is the relationship between initial increment in the income divided by the initial increment in the investment. Clear to it? Okay. Next one है investment. Okay. Then it is measured in the change in the national income caused by the change in investment. और नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को मेजर किया जाता है नेशनल इनकम के हेल्प से एंड इन्वेस्टमेंट. दस इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनिशियल इंक्रीमेंट इन्वेस्टमेंट एंड द इंक्रीजिंग इन द एवरेज इनकम. In practice, it is observed that when investment is increased by certain amount, then the change in the income is not restricted to the certain extent of initial investment. क्या बताया है कि अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, इनकम इंक्रीज होता है कुछ सर्टन परसेंटेज से, उसका इफेक्ट इन्वेस्टमेंट पर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर बिल्कुल भी नहीं होता है. वाई? बिकॉज वो जो थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है इन्वेस्टमेंट ड्यू टू सर्टन थिंग दैट इज़ यूज फॉर द बेसिक नेसेसिटीज़, and once the basic necessities are satisfied with the help of that additional increase with the increase in the investment, then only the amount is used for investment. इसीलिए अगर इन्वेस्टमेंट पर अगर सर्टन चेंज से इंक्रीमेंट होता है इनिशियल स्टेज पर, तो उसका इफेक्ट इन्वेस्टमेंट पर बिल्कुल भी नहीं होता है इनिशियल स्टेज पर. बट इफ़ द चेंज survives, if the change is for the several times, the change in the investment multiplier explains how many times the income increase as a result of increase in investment. लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है इनकम में बार बार चेंज होता है, तो उसका इफेक्ट इन्वेस्टमेंट पर भी होता है एंड उसके मल्टीप्लायर्स पर भी होता है. J.M. Keynes, the ratio of change in national income to the initial change in the planned investment expenditure. J.M. Keynes कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है? एक रिलेशनशिप बिटवीन है किस चीज़ के बीच में? इन चेंज इन द नेशनल इनकम एंड इनिशियल चेंज इन द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. और हैंसेंस क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द कोएफिशिएंट relating to an increment of investment by an increment of income. Investment multiplier is the ratio of final change in income to the initial change in investment. ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है? ये रेशो है किस चीज़ के बीच में? चेंज इन इनकम के बीच में और इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट के बीच में. ओके. अर्थमेटिकली के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट. ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल मतलब है चेंज इन वाई, दैट इज इनकम इज इक्वल टू के इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, वेयर के स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर and triangle y stands for change in income and triangle I stands for change in investment. Clear to it? Okay, let's understand this concept more deeply with the help of an example. Suppose the initial investment is rupees 100 crores and final increase in the income is 500 crores. Then the value of multiplier is S is equal to 500 divided by 100. The implication of K is equal to S is that for any level of change in investment in the economy, income will change 5 times of investment amount,
Investment multiplier indicates the multiplying effect of the investment on income. अभी देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या है. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक्सप्लेन करता है कि इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए चेंज हुआ है. क्या एक्सप्लेन करता है कि इन्वेस्टमेंट पर इनकम का इन्वेस्टमेंट पर कितना इफेक्ट हुआ है, कितने बार वो मल्टीप्लाई हुआ है, कितने बार. देयरफॉर इट इज सेड एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय द इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट. तो क्या करते हैं हम लोग, इनकम जो अमाउंट है उसको इन्वेस्टमेंट के अमाउंट से डिवाइड करते हैं एंड द अमाउंट व्हाट वी गेट, द नंबर व्हाट वी गेट इज द इन्वेस्टमेंट multiplier. Clear to it? Okay, thank you all. Please go through the concept once and then we'll move further in the next session with the next topic, that is multiplier and marginal propensity to consume. Clear to it? Okay, thank you all. Thank you. Please go through the video, understand the concepts and let me know if you have any doubts and queries for that. Thank you all. Be at home, be safe. Thank you.